I want to invite a person who is here as a blessing not only for the people of Sialkot, but for everyone who wants to learn language, literature, linguistics, and who wants to be an ideal teacher. What I want to say in other words, please welcome Professor Mr. Winston Bruce Gill. آپ کی کلیپنگ شو کر رہے ہیں کہ آپ تھک چکے ہیں. I must thank Mr. Kashif and organizers of this workshop for providing me with the opportunity to be among such brilliant people. Very honestly speaking, I am impressed with your questions and with your response to the talk that has already been delivered. You came out with extremely important questions. With the permission of Mr. Samdhani and Mr. Kashif, in fact, I too have been listening to Mr. Samdhani with rapt attention. جسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ میں بھی like everybody else presumably ہمہ گوش رہا ہوں. ہمہ تن کہنا چاہیے. ہمہ تن گوش کہ سارا تن کان ہی کان بنا ہوا تھا. سنتا رہا ہوں خوبصورت باتیں جو ہماری تھنکنگ کو سٹار کرتی ہیں, اور کچھ ایسی باتیں بھی ہوئیں جنہوں نے ہم اس لکی ہیں. ان فیکٹ وی آر آل لکی دیٹ وی آر آل ٹیچرز. سارے استاد بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سیمی ایجوکیٹڈ اور ال ایجوکیٹڈ اور گنوار لوگوں کی صحبت میں نہیں ہیں. I honestly feel myself very lucky to be in the company of such brilliant souls. Congratulations, all of you. And I'm honestly impressed with the level of teachers involved with kids' grammar schools. And I don't mean to flatter you. I have always believed in saying what I mean. I mean it, please. We have been talking about the nature of life, what is life, and it reminded me, because the answer was a bit exhaustive, a bit elaborate, a bit lengthy. I did not feel like interfering then, but with the speaker's permission and with the CEO's permission, I feel like saying something about it, because as teachers of literature, we all know that in literature, in English literature, we talk about existentialism. اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نظریہ وجودیت. وجود, انسان کا وجود. اور دیکھا جائے تو یہی فلسفی ہے. I remember the other day I was talking to my BS students what philosophy is. Philosophy is in fact nothing but expression of ideas vis-a-vis life. زندگی کے حوالے سے جو کوئی خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہی فلسفہ ہے. فلسفے کی ایک برانچ ہے جو تھوڑی ٹیکنیکل ہوگی, تھوڑی مشکل ہوگی, جسے ہم لاجک کہتے ہیں. But rest of the things that we talk about in philosophy, they are pretty commonplace. They may not be that easily understandable or comprehensible, but we know their importance, we know what they are. In the mid-20th century, after the horrors of the Second World War, and we all know that the 20th century has been an extremely eventful century. 20ویں صدی بڑی پر واقعہ رہی ہے اس اعتبار سے کہ بہت واقعات ہوئے ہیں 20ویں صدی میں جنہوں نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ 20ویں صدی کیسی تھی. 20ویں صدی میں the very first thing that gave the world a big jolt was the First World War. The First World War. And the First World War shook the very foundations of faith in Europe. ایمان کی بنیادیں ہل کے رہ گئیں.
यूरोप वाले जो ये सोचते थे कि हम क्रिश्चियनिटी हमारे सारे मसाइल का हल है, some of them were given rude shocks. And youngsters, began to move about in pubs and clubs, staying awake till late at night and drinking most of the time, not being able to figure out any solution to the problems that the people of Europe were facing after the First World War. Then they had the Great Depression in the 30s. The Great Depression, दुनिया में बड़ा मंदा आ गया, हम उर्फ आम में उसे मंदी कहते हैं, बड़ी मंदी आ गई बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर, जॉब्स के अंदर. जैसे आजकल थोड़ा सा सैंपल हमें मिला है कोविड की वजह से जो मंदा आया है या मंदी आई है. In the 30s, it was a big change. In Britain, people were even compelled, to use honey as a source of sweet. Now, they couldn't afford to buy a pack of sugar. चीनी का 1 किलो खरीदना मुश्किल हो गया था. And then, unluckily for the people of Europe, the Second World War started. And the Second World War harrowed the people of Europe and the world. You know the horrors of the Second World War. Some of you have read Nagasaki and in their BA course. That is only one glimpse of what that war was like, the Second World War. The horrors of atomic explosion in Nagasaki and Hiroshima. People had not completely recovered from these horrors when one big superpower got involved in another war, and that was the Vietnam War. America, again at war, because there has been a constant, almost perpetual, eternal conflict between communism and capitalism. फ्री मार्केट इकोनॉमी एक तरफ है, रियासती वसाइल रियासत के सारी के होने चाहिए. कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल आ चुका हुआ था. वो एक दूसरा नजरिया है, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज का क्लैश हुआ है. और वियतनाम के अंदर, कोरिया के अंदर, कोरिया गॉट डिवाइडेड, वियतनाम गॉट डिवाइडेड, एंड देन unluckily for the people of the world, we also had to witness horrors in Iraq, Syria, Libya, and then at the end of all this, Afghanistan. Extremely sad situation of the world. But in the mid-20th century, when the people were thinking about the nature of life, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये सारे पर्सपेक्टिव में जब जिंदगी की कैफियत के ऊपर गौर करते हो तो कुछ और तरह के ख्यालात ज़हन में आते हैं. हम सोच रहे जिंदगी क्या है. मैंने भी उनसे यही कहा जो अभी तक मुझे समझ आई है, being on the wrong side of 70, as I was saying yesterday, जिंदगी is a perpetual struggle. यहाँ कहा बेटियों ने, सही कहा, जो मुझे समझ आई है, it's a perpetual struggle. But to the philosophers in the mid-20th century, philosophers like Jean-Paul Sartre and Samuel Beckett came out with an extremely thought-provoking play, Waiting for Godot. Those who have read literature, they would bear me out that Waiting for Godot is an extremely thought-provoking play. उसमें एक सेंटेंस है जो मुझे जिंदगी का जवाब नजर आता है. वो कहता है लाइफ क्या है. लाइफ इज अ स्पैन ऑफ अ फ्लैश ऑफ लाइट. आपने देखा होगा कभी कभी हम धूप में खड़े होते हैं तो जिसकी ये मेरे से ज्यादा चमकने वाली घड़ी हो, उसके ऊपर जरा जब रोशनी पड़ती है तो थोड़ी देर के लिए रिफ्लेक्ट होता है और आगे जो बंदा हमारे खड़ा होता है उसकी आंखों में फ्लैश जाता है. मगर द मोमेंट यू मूव योर आर्म दैट फ्लैश disappears. So there is one sentence in that play, and that one sentence is, life is a flash of light between the darkness of the womb and darkness of the tomb.
چھوٹا سا دورانیہ ہے ماں کے پیٹ کی تاریکی کے بعد قبر کی تاریکی کے درمیان، جس کا نام زندگی ہے. یہ ہے لائف. اور یہ مجھے اور آپ کے لیے ایک بڑی، جسے کہتے ہیں تھاٹ پرووکنگ، اور فکر کو چھیڑنے والی حقیقت ہے کہ پھر اتنے چھوٹے دورانیے کو کیسے بسر کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. Those who are religiously inclined could be of any faith. مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ کہیں گے کہ اگر اتنا چھوٹا دورانیہ ہے تو پھر اس کو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے گزارنا چاہیے. And I personally subscribe to it. Subscribe to کے معنی ہے میں اسی کا حامی ہوں کہ اگر اتنا چھوٹا دورانیہ ہے تو پھر اس کو نیک کام کرتے ہوئے، اور نیک کاموں میں جو ابھی مجھے سمجھ آئی ہے، اور یہ مجھے خوشی ہے کہ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ جن میں کاشف صاحب بھی ہیں، ان کو میرے سے پہلے سمجھ آ گئی ہوئی ہے. کیا؟ ڈوئنگ تھنگس فار ادرس. اس چھوٹے سے دورانیے میں ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اور یہی اشفاق احمد بھی کہتے ہیں زاویے میں کہ کیا ہے؟ کریٹنگ فیسلٹیز، میکنگ تھنگس ایزی فار ادرس. میں سڑک پہ جاتا ہوں، آپ سڑک پہ جاتے ہو، رویوں کو کہتے ہیں کسی قوم کے رویوں کا سڑک پہ پتہ چلتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ ہم تو لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. We don't want to make life easy for others. یہ ساری جو بحث ہے it has been extremely، جسے کہتے ہیں نا فکر انگیز باتیں ہو رہی ہیں. And I'm grateful for giving me this opportunity to be here because personally I have benefited a great deal. It makes you think. ہم باتیں کریں critical thinking کی. جب ہم critical thinking کی بات کرتے ہیں، when we teach criticism or critical theory, we tell our students that criticism doesn't mean passing negative comments. Even تنقید کے پرچے کے اندر بھی ہم تنقید سے منفی معنی نہیں لیتے سارا وقت. کبھی کچھ ہوتا ہے، کچھ فالٹ فائنڈنگ بھی ہوتی ہے، بٹ ان فیکٹ اٹ مینز اسیسمنٹ. جیسے ہم سیلف اسیسمنٹ کی بات کر رہے تھے نا، کہ اپنا اندازہ، اپنا تخمینہ بھی لگانا چاہیے. یہ خود احتسابی نہیں ہے، دیٹ از سیلف اکاؤنٹیبلٹی. یہ سیلف اسیسمنٹ ہے کہ اپنی خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ کریں. کبھی رات کو سوچیں بیڈ پہ جانے سے پہلے، جو میں نے، مجھے افسوس ہے دیر سے شروع کیا ہے لیکن اب کیا ہے، کہ آج سارا دن کسی کی ٹانگ تو نہیں کھینچی، کسی کے اوپر کوئی منفی کمنٹ تو نہیں دیا، غیبت تو نہیں کی ہے. ہم نے زندگی کو سڑاند آنے والی منافقت سے بھر کے رکھ دیا ہے. منافقت، پی آر، بڑی اچھی فلاں بندے کی پی آر ہے. از اٹ اے جینوئن سنسیئر پی آر اور از اٹ پیوٹریڈ؟ پیوٹریڈ کے معنی گلگلی سڑی ہوئی ہے، بو آ رہی ہے. میں نے الیکشن کے اوپر دیکھا، وکلا کے الیکشن ہو رہے تھے، اور میں ایک دوست کے آفس میں، جسے اس کانٹیکسٹ میں ڈیرا کہتے ہیں، ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا. وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یاسر صاحب بیٹھے ہیں، اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. یہ صاحب آتے ہیں اور وہ جو ڈیرے دار ہیں، اس آفس کے وکیل ہیں، وہ اٹھ کے ان کو ملتے ہیں. اب یہ ان کی مخالف پارٹی کے تھے، فارمیلٹی تو پوری کر رہے تھے ووٹ مانگنے کی، لیکن تھے ان کی مخالف پارٹی کے. تو اس کے اپنے بندے ساتھی حیران ہو گئے کہ ہمارے دوست جو ہیں مخالف سے اتنا سینے مل رہے ہیں. تو وہ بندہ اپنے حیران ہوتے ہوئے دوست کو دیکھ کے نا، اپنے دشمن کو سینے مل رہا ہے اور اس کو کہتا ہے، اپنے دوست کو آنکھ مار رہا ہے کہ تو نہ فکر کر، اے میرا سینے تے نال سینہ ملانا کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ بیٹے ہماری ڈیلنگز ہیں. ہم نے ایسی ڈیلنگز بنا لی ہوئی ہیں. پہلے ان کو تو ہم پاک صاف کر لیں. مجھے جو چھوٹے چھوٹے 2 سپینز ملے ٹو ہیڈ ان دی انسٹیٹیوشن، میں نے بچوں کو 11ویں کے بچوں کو یہی سمجھایا، بیٹے ایک کام تو سیکھ لو، ٹو ٹیل دا ٹروتھ. کبھی جیسے ام الخبائث کہہ سکتے ہو آپ، ساری برائیوں کی جڑ تو وہ ہے. کتنا جھوٹ بولتے ہیں ہم، کتنی منافقت کرتے ہیں. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا
flash of light between the darkness of the tomb and the darkness of the womb. मां के पेट की तारीकी और कब्र के पेट की तारीकी के दरमियान छोटा सा दौरानिया है. अभी जब आपकी उम्रें कम हैं, कुछ की बहुत कम है, तो आपको लगता है अभी जिंदगी आगे पड़ी हुई है. Believe you me, it's not very long. When I was 56, I wrote a poem, and the title of the poem was Life at 56. 56 में यूं लगा कि जिंदगी तो हाथ से निकल गई है. जैसे मछली जब तक उसको आप हस्क से, छान बूरे से साफ नहीं कर लेते, पकड़ते हो तो हाथ से फिसल जाती है, फिर आप उसको साफ करते हो, फिर टुकड़े करते हो, जिंदगी निकल जाती है हाथ से बेटे. It is the nature of life. It is not going to be with you for very long. So do whatever you can do for others, because ये है हमारी life की. Life is struggle, no doubt. It can be defined in a number of ways, no doubt. You can say many things about life, and it is good that the word life makes different people think differently. यहाँ उन्होंने कहा कि जिंदगी के मानी मुख्तलिफ लोगों के नज़दीक मुख्तलिफ हैं. ठीक है. And everything in the world is relative. अभी हम relativity के बाप की एक कोटेशन सीख रहे थे. That the Einstein, Albert Einstein, who gave us the theory of relativity. Relative है हर चीज. One man's food is another man's poison. मैं बच्चों को समझा रहा था कि एक दिन मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, प्रोबेबली थाईलैंड की थी. तो हम जब समड़े आल से गुजरते हैं या कराची जाते हुए डिफरेंट स्टेशन से गुजरते हैं, तो खिड़की में लोग आ जाते हैं उस इलाके की सौगात लेके. समड़े आल से गुजरते हैं तो एक ज़माने में होता था कि जी समड़े आल की बर्फ़ी बड़ी मशहूर है, तो वो खिड़की में लेके बर्फ़ी आ जाते थे. मैंने वो डॉक्यूमेंट्री में देखा कि एक बच्चे ने, he had probably sat his matriculation exams. मैट्रिक का इम्तहान दे के जो चंद माह फारग होते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, उसमें उसने चंद लोहे की सलाइयों के ऊपर कुछ स्पाइडर्स थे, क्योंकि उनके कल्चर में ये खाई जाती है, वो स्पाइडर्स थे फ्राई किए हुए ऊपर लगाए हुए, और वो सेल कर रहा था. ये वो कल्चर है. मैं समझा रहा हूं, वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन. रिलेटिविटी, एक चीज मेरे लिए अच्छी है दूसरे के लिए बुरी है. दिस इज व्हाट रिलेटिविटी इज. इन फैक्ट यू नो, अ पर्सन आज भी पूछे, मैं दुकान पर खड़ा होता हूं, अंदाजा करता हूं, लोगों को शॉपिंग करते देखता हूं. परसों भी मेरा वो बेकर मुझसे कह रहा था कि सर ये फलां चीज़ महंगी हो गई है. मैंने कहा हाँ हो गई है यार, देखते नहीं हो आप कि मैं आपसे ये 3 लीटर दूध लिया करता था नेस्ली का, अब मैं 2 लीटर लेता हूँ. इट मीन्स माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज गोइंग डाउन. लाइफ इज डिफिकल्ट. इट इज, यू हैव गॉट टू, ये लाइफ स्किल्स में है, यू हैव गॉट टू मेक एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स करना पड़ेंगी, करनी होती हैं अकॉर्डिंग टू requisites of the situation. तो ये है लाइफ. अच्छी बात है कि हम सोच रहे हैं, यही मकसद था इस वर्कशॉप का, टू कंपेल अस ऑल टू थिंक. आपके तो सबके अंदर माशाल्लाह ढेर की क्रिटिकल थिंकिंग है जो मैंने ऑब्जर्व किया है. यू आर ऑल वेरी लकी, वेरी, आई डोंट मीन टू फ्लैटर यू, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी टैलेंटेड पीपल. यू आर थिंकिंग, यही क्रिटिकल थिंकिंग है. और अभी हम बात कर रहे थे क्रिएटिविटी कैसे पैदा होगी. क्रिएटिविटी फॉलोज क्रिटिकल थिंकिंग. जब पहले क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, क्रिएटिविटी खुद ही आएगी. कल मैं कह रहा था, वक्त थोड़ा सा कल हमारे पास, आज बहुत है वक्त हमारे पास, तो कल मैं कह रहा था कि ऑब्जर्वेशन, तो डॉक्टर साहब अभी तक आए नहीं है. डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ऑब्जर्वेशन से, हाउ कम यू नो दैट वील, ऑब्जर्वेशन एक एलाइड फिनोमिनन है, जॉइंड है किसके साथ, रिफ्लेक्शन के. ऑब्जर्वेशन अकेले थोड़े हो रही है. मैं कोई चीज देखता हूं तो ऑब्वियसली मैं सोचता भी हूं ये क्यों, कैसे, कहां से, किसकी महारत, किस वजह से यहां आ मौजूद हुई ये चीज. न्यूटन ने सेब को नीचे जाते देखा, ऑब्जर्व ही किया ना, एंड देन ही बिगैन टू थिंक, एंड द रिजल्ट वाज
the theory of gravitation, gravitational pull, कशिश सकल, जमीन हमें अपनी तरफ खींच रही है। ऑब्जर्वेशन से ये तहरीक मिली कि मैं इन सत्रों के ऊपर सोचना शुरू कर दूं। ये है बेटे, क्रिएटिविटी आएगी ऑब्जर्वेशन वगैरह से, और चीज़ें भी कल बातें हुई थी, बट इट इज़ फॉलोड बाय प्रीसीडेड बाय, इससे पहले क्या आएगा? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, हमने चीज़ों को, मैंने अभी पहले कह चुका हूं कि क्रिटिकल के माने मनफी तनकीद नहीं होता, उनकी असल हैसियत का अंदाज़ा तहमी, इट मीन्स असेसमेंट, इट मीन्स इवेल्युएशन। क्रिटिसिज्म के माने इवेल्युएशन के हैं, क्रिटिसिज्म के माने असेसमेंट के हैं, क्रिटिसिज्म के मानी अप्रेजल के हैं। जैसे आप किसी ब्रोकर से घर की कीमत लगाते हो कि अब ये इतने साल पुराना है, इतनी जगह पे बना हुआ है, इस तरह की कंस्ट्रक्शन है, आज इसकी कीमत क्या होगी? ये है क्रिटिकल इवेल्युएशन। तो क्रिटिकल थिंकिंग इन फैक्ट रिजल्ट्स इन, फिर हमने बात की क्वेश्चंस के ऊपर, बहुत अच्छी बात की है समधानी साहब ने कि सवाल किसी भी क्लासरूम की जान होते हैं। जिस क्लासरूम में सवालात नहीं हो रहे, उस क्लासरूम में शायद इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही। क्वेश्चंस, ये तो उनका जो टॉपिक था उस जाविये से ठीक था, बट वी एज इंग्लिश टीचर्स, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द क्वेश्चन? एक जगह मैंने सुना, किसी ने कहा, इट इज परफेक्टली ऑल राइट टू आस्क क्वेश्चंस, इट डजंट एंटागोनाइज द पर्सन हु इज बीइंग आस्क्ड। जिसे पूछा जा रहा है वो नाराज नहीं होता, बट इट्स द वे यू आस्क दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। किस तरह पूछते हो, गुस्ताखाना अंदाज से पूछते हो, एंड द मोमेंट यू बिगिन टू पॉन्डर over such facts, you land into the field of communicative competence. Communication, हम बातें करते रहे, आज भी हुई है, लाइफ स्किल में से भी एक है, क्या? Communication, improving your ability to, और बहुत अच्छा जवाब मैम अजमत ने दिया, शायद हमने उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। क्या था? Communication, the ability to put your meaning across effectively. बहुत अच्छा जवाब दिया है कि अपना मुद्दा अपने मानी अगली पार्टी तक, अगले बंदे तक मौसर तरीके से पहुंचा लेना, ये कम्युनिकेशन है। दिस इज कम्युनिकेशन। लेकिन हम, when we begin to think about things as teachers of English, I remember we keep teaching, ये थोड़ा सा मेरा अपने सब्जेक्ट का जब बातें शुरू होंगी थोड़ा सा टॉपिक भी होगा, that we keep teaching them grammar. We keep telling them how to make interrogative sentences, how to make exclamatory sentences, how to make optative sentences. We keep teaching them. We are all teachers, we know this, because this is what exactly we do in our classes. हम अपनी क्लासेस में यही तो कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी पूछेंगे मेरे से सवालात, आप पूछते हैं, सबसे पूछते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि उसका मकसद होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएं। लेकिन मैं भी आपसे सवाल पूछता हूं कि जब हम सवाल करना सीखते हैं, तो क्यों ये नहीं सीखना चाहिए कि सवाल ज्यादा पोलाइटली कैसे पूछा जाए? सवाल ज्यादा पोलाइटली कैसे पूछा जाए? बिकॉज ऑन मेनी ओकेजन्स, inadvertently, unwittingly, unknowingly, we happen to make our teacher angry. बेटे, अदम तवज्जही में ना चाहते हुए, ना एहसास करते हुए हम अपने उस्ताद को नाराज कर बैठते हैं या उसका दिल दुखा बैठते हैं। तो कैसे पूछा जाए? जब हम इस तरह की नाइसिटीज में, नफासतों में, बारीकियों में, सटल्टीज में गौर करना शुरू करते हैं, तो देन यू लैंड इनटू अनदर एरिया, एंड दैट इज द एरिया ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। Knowing different grammar points is linguistic competence.
کہ مجھے لینگویج کا کمپیٹنس بائی دا وے از نالج آف رولز. یہاں جو میری گفتگو ہے اس کے اندر کمپیٹنس کے معنی ہے نالج آف رولز. جب ہم کہتے ہیں اس بندے کی لنگوسٹک کمپیٹنس بہت اچھی ہے، اور جب ہم ٹیچر ہوتے ہوئے کسی کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور سرٹیفکیٹ باہر جانا ہوتا ہے تو پھر ہم ایسا لکھتے ہیں کہ اگلے بندے کو سمجھ آئے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، that he has got wonderful communicative competence. Communicative competence. It is different from linguistic competence. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، ابھی آ جائے گی 1 منٹ کے بعد، سمجھ ابھی نہیں آئی ہے، کہ لنگوسٹک کمپیٹنس کے معنی ہیں گرامر سیکھ لینا.